Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your first session for my all ninth graders for chemistry, that is matter in our surroundings. So, this is your very first chapter of your science, that is matter in our surroundings for class 9 chemistry. So this video is dedicated to all my dear new grade 9 champs. So today this session again, many things are little bit slightly deleted, so we are going to complete this chapter in two lectures today, and in the next lecture we'll complete with this chapter. Along with that, we're going to do some important in-text questions of the NCERT, because those are सबसे important questions which can come in your exams for sure. So let us start with matter and assignment. But before that, what you need to do, make sure to like this video, share with the other friends जिन्होंने अभी 9th grade enter किया है, and subscribe to the channel. इस साल a quick introduction I'll give you before starting. इस साल chemistry में आपके पास है 4 chapters. Okay, matter in our surroundings is matter around us, pure atoms and molecules and structure of atom. Now you know what the fun part is. First chapter and second are together related, and third and fourth are together related. अगर हम थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ के ये वाला चैप्टर पढ़े ना, आपको और इजी समझ आएगा. बट एज वी हैव टू गो योर एज पर योर एनसीईआरटी, सो नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट with the first chapter today. So matter in our surroundings, sit back, carefully listen, try to make down a few notes if you want, and let's start. So basically, before starting, let me tell you what are the topics of this chapter. So the chapter, five important topics are there: physical state of matter, characteristics of matter, and states of matter. These three topics we are going to discuss in our today's session. And then we have change in state of matter and evaporation, which we are going to discuss in our next session. All right, so let us start with our first topic, and before that, let's do a little bit of intro. Now, वेन यू लुक, अभी आप अपने सराउंडिंग्स में देखो, ठीक है, कोई भी चीज अपने बाजू में, कोई भी चीज, आई एम टेलिंग व्हेन आई से एनीथिंग दैट मींस एनीथिंग, लुक अराउंड यू. इफ आई लुक अराउंड यू, आई कैन सी सम बुक्स, I can see a mobile phone, I can see a pen. So when you see कि सारी चीजों के अलग अलग शेप है, उन सब के अलग अलग साइज, और they have different texture also, correct? Now, everything in this universe, not in the world, everything in this universe is made up of something that is known as matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. Now, in our world, everything is a matter. Even we human beings are a matter. Air is also a matter. Take it anything. Now, let us say I am holding a pen in my hand right now. The pen, okay, if I keep it on the table, it has some mass, very small, less mass, but it has some mass. Okay, it's not zero. It has some mass and it is occupying some space also. So, उस चीजों को हम बोलते हैं matter. ओके, मैटर इज नथिंग बट ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करे. ओके, सिंस आर अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्राइड टू डिस्कवर अराउंड द सराउंडिंग्स. फॉर एग्जांपल, इंडिया में इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज द पंच तत्वस. करेक्ट, पंच तत्वों के हिसाब से Indian philosophers divided that matter is made up of air, earth, fire, sky, and water. Okay, that was the concept of Panch Tattva. Greek, talking about Greek philosopher, which they, मतलब ग्रीक ने तो अपने हाथ सारे जगह ही फैला के रखे थे. Any new thing you study, Greek philosopher सबसे पहले पहुंचते हैं उधर, right? So they had also made a similar classification of matter. Today, the scientists in our current world, they have classified matter based on their physical properties and chemical properties. So physical और chemically matter को divide किया गया. All right. अब इस चैप्टर में, in this chapter, we will be learning about the matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter we will take up in the next chapters. As I said you, पीछे से पढ़ते तो और मजा आएगा grade 9 chemistry का. So let us start with the first topic of the physical nature of matter. Now,
The first concept comes is matter is made up of particles. I am telling कि जो matter है वो particle से बना हुआ है. Okay. During very long time जब लोगों matter के बारे में discuss कर रहे थे उनके दिमाग में दो topics आए. पहला टॉपिक था कि मैटर जो है कंटिन्यूस है. ओके, मैटर क्या है? एक कंटिन्यूस ब्लॉक है. ठीक है, एक कंटिन्यूस ब्लॉक मैटर होता है. ओके, पीपल यूज टू थिंक, whereas other thought process was that it is made up of particles. दूसरे बोलते थे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है. ओके, अब दोनों का कहीं ना कहीं तो सही हो सकता है. जब हम बात करें लेट्स से वुड, वुड तो हमको पार्टिकल्स में नहीं दिखता, वी कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ शीट ओनली. पर अगर हम सैंड, शुगर, उन सब की बात करें, दैट लुक्स लाइक particles. So what is matter made up of? Matter is made up of particles. Many particles are joined together in very 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 small distances and then they make a continuous sheet. Okay, so let us understand with this topic with an activity. Let us say आप 100 ml पानी लोगे. Okay, now fill the water and mark the level order. अब क्या करो? अब पानी दिया 100 ml. अब you should put some salt or sugar in it. Okay, salt या sugar डालो पानी में. Now absorb any change. Will there be any change? Now look over here. These are my, as it is what it is, my liquid. Water है तो there will be spaces. Correct? So let us say this is my water. Okay, water है 100 ml. अब उसमें मैंने sugar डाला. Sugar के particles will be occupying some spaces here. जो बची हुई स्पेसेस है वहां पे जाके पार्टिकल्स आ जाएंगे. सो इज देयर एनी चेंज इन वाटर? नो, देयर विल बी नो चेंज इन वाटर. जब आप थोड़ा सा डाल रहे हो ना, पूरा डब्बा तो नहीं डाल रहे. व्हेन यू पुट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इट विल डिसॉल्व इन इट. डिसॉल्विंग मतलब वो शुगर पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. ओके, सो दैट इज इट. अब तो पता चल गया, चलो पार्टिकल्स बनते हैं. Matter is made up of particles, but in particles का size क्या है? Now what you have to do is, again पानी लो 100 ml water and in that you have to put potassium, not potassium, potassium permanganate. Okay, you have to put potassium परमैग्नेट. ओके, पोटेशियम परमैग्नेट डालोगे और उसमें क्या करो, इसमें परमैग्नेट डाला. अब इसमें से 100 ml पानी दो, दूसरे में डालो. सॉरी, 10 ml लो. उसके बाद वापस इसमें से भी निकालो 10 ml, दूसरे में डालो. फिर इसमें से भी निकालो, दूसरे डालो. सो एज यू कैन सी व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन, जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे द कलर विल स्टार्ट फेंटिंग. है ना, 90 ml पानी में वापस 10 ml डाला, फिर उस 100 में से वापस 10 ml लिया, है ना. सो इट विल, व्हेन यू डू इट विल कीप ऑन डाइल्यूटिंग. देयर विल बी सच अ सिचुएशन, वाटर एकदम क्लियर हो जाएगा. एज यू सी, कलर इज फेंटिंग, है ना, कलर फेंट होता जाएगा. सो वी कैन इमेजिन दैट अगर हम 2-3 क्रिस्टल्स लेते हैं, बस 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होता है, 100 ml वाटर में डालते हैं, कितनी बार करें फिर भी उसका कलर उसमें रहता है. दैट मीन जस्ट 2-3 crystals have so many particles. So many particles, as in the particles are very small in size, isn't it? Now, let us move towards the characteristics of the particles. Now, let me tell you, characteristics as in particles जो है हमको पता small है, correct? पर उनके और characteristics क्या, that we have to understand. Okay? Now look over here. First property is that particles of matter have space between them. Okay, they have space between them. How can I tell? How can I can tell anything? How will you believe? Now there is a proof for it. When we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani you might have drunk, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other. The same which happened in the sugar wala example leak. Look, just leave tea, coffee, sugar, just take water. Okay, I'm telling you, this is my water particles. Okay, water particles. Now what you do in these water particles, put sugar. Put sugar at a normal level like 1 tablespoon, like that. When you put, आपको पता चलेगा कि sugar dissolve. अब उसको stir करोगे, sugar ऐसा वो dissolve हो जाएगा. कहाँ जाता है वो sugar? It doesn't get evaporated, invisible हो जाता है, right? Because अब हमारे liquid में space है. लिक्विड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब जो शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स है वो इन स्पेसेस के बीच में एकोमोडेट हो जाते हैं, वो इधर इधर बैठ जाते हैं.
and hence we can नॉट सी देम, क्योंकि और लेवल भी चेंज होगा, जितना लेवल पानी उतना ही होगा। नींबू पानी में ऑल्सो इफ यू पुट, वाई हाउ डज एवरीथिंग मिक्स टुगेदर, ऐसा क्यों नहीं था, बस पानी दिख रहा है, फिर नींबू दिख रहा है, फिर देन शुगर दिख रहा है, देन मसाला दिख रहा है, अलग अलग क्यों नहीं दिखता, सब साथ में मिक्स क्यों होता है? दैट मिक्सचर इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। पानी, शुगर के पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व होते हैं और बाकी की जगह मसाले आ जाते हैं, और अगेन वाटर एंड नींबू का जूस दैट इज ऑल्सो मिक्स्ड। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, स्पेस की वजह से, पार्टिकल्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ओके, एंड हेंस एवरीथिंग कैन डिसॉल्व इन ईच अदर, राइट? लाइक सॉलिड, सॉलिड की बात करो, टेक वुड, टेक अनदर वुड, इफ यू बैंग देम विद ईच अदर, क्या वो मिक्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनके स्पेसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बट पानी के स्पेसेस आर मोर कंपेयर टू सॉलिड, सो हेंस थिंग्स कैन गेट डिसॉल्व्ड इन इट। ऑलराइट, next property comes of particles of matter are continuously moving. How can I say they're moving? Now particles are so small, how is it moving? Right, now see this, have you ever heard about incense stick? If not, you might have obviously heard about agarbatti, correct? And I guess almost every one of you might have agarbatti in your home, okay? Now when your mom or you, your parent, anyone does, some for praying, जब पूजा करते हैं, so अगरबत्ती हम जगाते हैं, isn't it? Now this agarbatti, it's not burned near your nose, no, obviously not. Obviously अगरबत्ती या तो आपके किचन के उधर जगेगी, या तो फिर आपके हॉल रूम में होगी। Now उस हॉल रूम से, let us say it is in a hall room, और आप बेडरूम में बैठे हो, स्टिल यू विल गेट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती। हाउ? बिकॉज दैट स्मेल ऑफ द अगरबत्ती विल ट्रैवल एंड रीच योर नोज। ओके, हाउ डज इट ट्रैवल? करेक्ट, दैट मीन्स जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग एंड जैसे वो मूव कर रहे हैं एयर के साथ, वो आपके पास पहुंच रहे हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं, isn't it? नाउ जब भी अगर इंसेंस स्टिक जगी नहीं है, अगर जगी नहीं है, ऑल राइट, इट्स नॉट, इट्स अनलिट, ओके, यू हैव टू गो वेरी क्लोज टू स्मेल इट, ठीक है, आपको नजदीक जाना पड़ेगा, बिकॉज देर आर नो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दैट मीन्स वी नीड हीट, या तो देर शुड बी अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो द पार्टिकल्स विल मूव, एंड द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स इन रैंडम डायरेक्शन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. So there is kinetic energy as well. So if you increase the heat, kinetic energy बढ़ेगी और particles यहाँ वहाँ घूमेंगे. Okay, similarly like here also ink and water. ink का एक ड्रॉप आप बस डालो वाटर में, पूरे वाटर में अपने आप फैल जाएगा. How? It is moving. There is kinetic energy, isn't it? So because of kinetic energy, it will move and give the entire color, water the color. ठीक है. So as I said, particles of matter are continuously moving and they possess what we call as the kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by the matter. Okay, जब भी कोई random direction में particles घूम रहे, that is kinetic energy. Compared to temperature, okay, temperature and kinetic energy, we denote it as ke or e and in subscript k. Okay, you can also write it as ek, kinetic energy. These both are directly proportional. Hence that means अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, so kinetic energy also increases. Okay, another example I will give you. Okay, everyday example है ये. Now when your mom is cooking in the kitchen something very yummy, ठीक है, let us say your mom is cooking pav bhaji. Okay, so when she cooks pav bhaji in the kitchen, you're not in the kitchen, you're some in another room, how can you get the smell of the pav bhaji? How? That is because the pav bhaji is having heat in it. The temperature is more, है ना, temperature ज़्यादा है. So the particles have kinetic energy और उस kinetic energy से they move fast and reach your nose. अब उसी पाव भाजी को फ्रिज में रख दो, फ्रिज में पूरी ठंडी कर दो उसको, पूरा ठंडा कर दो.
Now you cannot smell it. You have to go very close to it to smell because kinetic energy have come away. So as temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, kinetic energy also increases. Okay. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मैटर के जो पार्टिकल्स है दोनों को अट्रैक्ट करते हैं अब आपको थ्री चीजें लेनी है व्हाट आयन नेल लो रबर बैंड लो और पीस ऑफ चॉक लो इन सबको तोड़ने की कोशिश करो हैमर कट स्ट्रेच जैसे भी विच ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट अट्रैक्शन चौक को तो आप इजीली अपने हाथ से तोड़ दोगे है ना आई रबर बैंड को आप खींच के तोड़ सकते हो या कट करके तोड़ सकते हो बट आयरन नेल क्या आयरन नेल टूटेगा नहीं इफ आई हैमर इट इट कैन गेट फ्लैटेंड ठीक है वो फ्लैटन हो जाएगा बट इट विल नॉट ब्रेक सो कैन आई से दैट आयरन हैज द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है इफ देर इज नो अट्रैक्शन तो सब कुछ ऐसे फ्लो हो जाएगा है ना how are things solid like I am on the table right now ठीक है my laptop is on the table so table how is it still why is it not flowing and just damaging no why because there is attraction between the particles पानी flow क्यों होता है because attraction is less gases इतनी fast कैसे जाती है attraction is very less but in solids attraction is very high and hence things are attracted so particles of matter attract each other. So what are the three properties? Let us revise. The three properties of matter are first, particles of matter have space between them. First one. Next, particles of matter are continuously moving. Second. And then particles of matter attract each other. So these are the three properties of matter. Okay, so let us do one question here. Give the reason for that. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. So, what is the reason here? Due to kinetic energy. ठीक है ड्यू टू काइनेटिक हॉट फूड हैज हाई काइनेटिक एनर्जी सो द फूड smell can reach you easily but for cold food there is no kinetic energy very less kinetic energy so you have to go close all right. All right, so let us move ahead. Next, the last topic of the day is the states of matter. So, as you know, there are three states of matter solid, liquid, and gas. There are few more, like which have scientists discovered that is BEC, Bose Einstein condensate, as well as plasma. So, these are the two extra, you can if you want to know as per last year that was there in the syllabus आपके लिए इस साल नहीं है so you did not need to worry about studying that okay so let's come towards solid now you have the base thickest you have to remember the properties of them okay that's I've written in the form of table you have to remember the properties so solid we know solid is nothing but like all the solid things like ice then table then what else your books your pens your pencils everything is solid right now what are the properties if you let's take one example for everything okay solid के लिए let us take a pen now pen it has a fixed shape थोड़ी ना आज पेन आपका ऐसा सिलेंडर टाइप में देखा है कल वो क्यूबॉइड हो जाएगा no obviously it has a fixed shape and a fixed volume also okay solids cannot be compressed means compressing it to change its state okay या compress कर देना उसको और उनके पार्टिकल और नजदीक लाना that's not possible because the particles are already so less solids have high density why high density because of this ठीक है space between particles is negligible means very close the particles are very close to each other okay the particles are very close therefore they have high density okay और जब भी इतने close है okay they are close मतलब उनका attraction कितना ज्यादा है solid have very high attraction between each other तभी तो space कम है isn't it now लिक्विड जो होता है वो बीच में आता है ओके दैट इज द मिडल थिंग लिक्विड के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेरी कॉमन एग्जाम्पल ठीक है नाउ नो फिक्स शेप
ऑब्वियसली वाटर को भी आप ग्लास में डाल दो, ग्लास का शेप ले लेगा। पुट वाटर इन लेट्स से अ क्यूब, क्यूब शेप में उसका जगह फ्लोर पे डाल दो, फ्लोर के जैसा हो जाएगा, राइट? सो इट हैज नो फिक्स शेप but a fixed volume. अगर I am telling I have taken 100 ml of water, so कहाँ पे भी डालो आप, it will remain 100 ml only. It can be slightly compressed because उनके particles में थोड़ा सा space होता है, so you can compress it, not very much but very lightly. And liquids are fluid always comes like liquids and gases, they are always known as fluids. Force of attraction moderate, space between particles moderate है, ठीक है? सॉलिड कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड्स का स्पेस ज्यादा, उनके थोड़ी थोड़ी ज्यादा स्पेस होती है, ओके, दे आर लिटिल बिट मोर स्पेसेस, और अट्रैक्शन मॉडरेट रहता है, ठीक है? यू कैन नॉट से वेरी हाई और वेरी लो, मॉडरेट, ओके? कमिंग टुवर्ड्स गैसियस स्टेट, योर गैस, फॉर गैस लेट अस टेक एयर, ओके? एयर के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है? एयर का कोई तो शेप नहीं है, यू कैन नॉट सी इट, लाइक स्मोक यू कैन सी दैट, बट उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता लाइक लिक्विड, और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। अगर आप इफ यू हैव लाइक लेट्स से 100 ml, okay, so 100 ml if you put in one cup it will be 100, another 550, and because it is very compressible, ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ओके, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली कंप्रेस देम एंड ब्रिंग देम टुगेदर, ठीक है? और दे आर आल्सो फ्लैट ऑफ फ्लूइड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में सबसे कम होता है, व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स कितने दूर है, अगर पार्टिकल्स दूर है तो attraction will be less, अगर particles are close to each other attraction will be more, okay? So space between particles of gases very high, सबसे high space gases का ही होता है, and they have very less attraction नहीं है, इस वजह से तो इतने दूर है, right? Now comes one topic about compressibility, okay? Now compressibility क्या होती है? We have observed that gases are obviously highly compressible when compared to solids and liquids. Solids तो compress हो ही नहीं सकते और liquids बहुत कम होते हैं, but gases can be compressed easily. The first example is of your LPG. In your homes you use it, right? Liquefied petroleum gas. So this gas cylinder which you get in your home for cooking everything, or you can take the oxygen supply to hospitals in the cylinders as compressed gas. अब इतना सा सिलेंडर होता है, at an average, and I'm not sure about your home or something, at an average I'm telling approximately 2 months this cylinder must last, okay? At an average I'm telling, it can be 1 month also, it can be 5 months also, 3 months, at an average I'm telling, at an average ये सिलेंडर जो होता है ना 2 months तक चलता है। इतना सा सिलेंडर, हाउ डज इट गोस 2 मंथ? हर दिन कुकिंग करते हो है ना, दिन में ही कितनी बार गैस चालू होता है, राइट? द थिंग इज इस पूरे सिलेंडर के अंदर ना बस इतना सा नहीं होता, दे हैव उन्होंने गैस भरी 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 बहुत सारी गैस भरी होती है, इसलिए वो लिक्विफाई हो जाता है, बिकॉज द पार्टी ये था, ये पहला बार डाला, उसके बाद दूसरा बार डाला, सो व्हाट हैपेंस, स्पेसेस कम होना चालू होता है, कंप्रेस हो जाता है, गैस जितनी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ कम 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 होती जाती है स्पेसेस, राइट? लाइक इन योर बलून्स ऑल्सो, यू ब्लो, एयर जाती 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 कंप्रेस होती जाती है ताकि और हवा आ सके, राइट? सो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. Similarly in CNG also, compressed natural gas in your vehicle, auto rickshaw and सब में, so it is used as a fuel these days in vehicles. It is high compressibility, large volumes of gas can be compressed into small cylinder and transported. हम बहुत अमाउंट की गैस एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं, why? Because the property of compressibility, हम easily compress कर सकते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, all right? Let's do a question, your in-text questions now. Question says that liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. अब देखो, liquids के पास टॉक अबाउट डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैस से क्या सबसे कम होती है, देन लिक्विड्स बीच में होता है और सॉलिड सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, okay? Solids have the highest density compared to liquids. Now what about ice? When I talk about ice, ice is a solid,
ठीक है, वाटर इज अ लिक्विड, सो आइस फ्लोट क्यों करती है? इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, जो आइस होती है, राइट, आइस हैव हॉलो स्पेसेस इन इट, ओके, इट इज हॉलो इनसाइड, ओके, एयर स्पेसेस आ जाती है। सो ड्यू टू बायंट फोर्स, आप पढ़ोगे इन योर फोर्सेस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, एंड ग्रेविटेशन में, सॉरी ग्रेविटेशन में, एक बायंट फोर्स पड़ जाता है हॉलो स्पेस में, तो एयर कैविटीज के रहते हैं, इट गेट्स बायंट, सो वो फ्लोट करता है। सिमिलरली ना वाटर ऑल्सो, द आइस बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, और आइस बोर्ड्स जो होते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट सिंक, बिकॉज दे हैव एम्प्टी स्पेसेस इन इट, ओके। नाउ चलो थोड़े रीजंस देते हैं अभी इनको। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर एक वेसल डालो पूरा वेसल कंप्लीट हो, लाइक अ बलून, बलून की हर जगह में गैस होता है, राइट, ऐसा थोड़ी ना एक जगह में दूसरे में नहीं है, पूरे बलून में गैस होता है, सो इट विल ऑक्यूपाई। gas exerts pressure on walls of container. If you have a container, walls पे पूरा इसका प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज gases are very far from each other, right, so walls पे प्रेशर डालते हैं। wooden table should be called a solid. wooden table को solid क्यों बोले? First reason you can say that it has fixed shape, correct, it has fixed shape, it has a fixed volume, है ना, it has a fixed volume also, सारी solid की properties you have to write, है ना, it has a fixed volume, fixed shape, थोड़ी ना टेबल आज रेक्टेंगल है तो कल सर्कल हो जाएगा, राइट, it has a fixed shape, fixed volume, है ना, and the attraction is very close, so hence that's the answer. Next, we can easily move a hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Why? अब देखो, let me explain you this with a diagram. ये देखो, air. Let us take air here. Okay, this is my air. Okay, this is my air particles. Now I am going to take the wood particles. Okay, this is my वुड पार्टिकल्स। अब देखो, यू कैन इजीली लो कि हम अपना हैंड इजीली वेव क्यों कर सकते हैं एयर में, बिकॉज स्पेसेस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा स्पेस है, हमको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगता। इफ यू पुट योर हैंड इन वाटर, सो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आता है क्योंकि स्पेसेस आर लाइक क्लोज। अब वुड की बात करें तो वुड तो पूरा सॉलिड है, उनके स्पेसेस ही नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल ही ऑलमोस्ट, राइट, सो हाउ कैन वी पुट आवर हैंड थ्रू द सॉलिड? कराटे एक्सपर्ट्स के प्रैक्टिस होती है, वो उस स्पेसिफिक एंगल पे मारते हैं एंड पोजीशन पे थ्रू विच वो वुड टूट जाए, अट्रैक्शन टूट जाए, ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई कराटे एक्सपर्ट्स इजीली ब्रेक कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू द सेम। So with this, students, we have completed with our today's session. Thank you so much for watching. हमारा पहला session for matter and surrounding is all completed. Now in our next session, we'll complete this chapter by doing your evaporation and the changes in state of matter. So make sure to like this video, share with your friends, and subscribe the channel right away. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.